Hi, welcome to this video. In today's video, I will be covering a very important topic which many of the parents and students face, specifically when preparing for the exams. So, the topic is how to remember for exams, how to remember better for the exams, right? So, there are a few concepts which I will be discussing in today's video. The very first thing which I will be covering is that uh, forgetting has become common. It has become common nowadays. So we'll touch on that. Second, we'll be looking at Ebbinghaus forgetting curve, EFC. What is that? We'll be looking at into that. Third thing which we'll be looking at is how to categorize our learning. How to categorize our learning so that we can remember the things for a longer period of time. Fourth is we'll be looking at a very important concept of active recall. Active recall. Here we'll see that what is the difference between revision and recall. And the fifth concept that we'll be touching is take support. Right. So these are some of the things which I will be covering in today's video. Please make sure you watch the video till the end. Uh, so yeah, let's start. See, very first thing which we need to understand that in today's time there are few things which have increased, right? The consumption social media consumption has increased a lot. Our distractions have increased a lot. Because of the social media, our focus has decreased. Because our focus has decreased, we are not able to comprehend things, and our comprehension power while learning something has decreased a lot. Also, if you look at in today's time, what has happened that people are sitting for a longer period of time, either it be teenagers, either it be working professionals. Everyone is sitting for a long period of time, because of which what has happened that the physical activity has decreased, and because of this, what is happening that it has started affecting our brains. All these things increase in social media addictions, distractions, also reduction in focus, reduction in comprehension, less number of physical activities. All these things have combinedly resulted in you know uh, in memory lapses. Also, one more a very important point in today's time, if you see, everyone is spending their time, they're spending time in ACs. They are not getting the sunlight absorption has decreased. If you look at the levels of vitamin B12, vitamin D, all these things have decreased. Since the physical activity has reduced, the reduction in physical activities and combined with all these factors has a direct impact on our memory lapses, right? In today's time, if we want to learn anything, what we are doing, we are just going on YouTube. We are going on YouTube and just snacking the content, right? Earlier, what used to happen that earlier people used to read books. They used to read books. When they used to read books, they read, and then they think, then they ponder upon that, and then they produce that in their own way, right? In today's time, what is happening? Just uh, social media video they're consuming, and not having time to ponder or think, and then they are just trying to remember, but that is not the right way. So if you look at today's time, forgetting has become common for everyone. When I say everyone, it's not just teens, it's also for the working professionals, it's also for the mid-aged people, it is also for the old age, everyone, right? So this is the first thing which we need to understand, and we have to take this seriously. Now, moving to the second thing,
And let's start with understanding what is Ebbinghaus forgetting curve. So Hermann Ebbinghaus was a German psychologist. He was a German psychologist, and uh, he has written about this curve in his book called Memory, right? So what this forgetting curve is all about. So what Ebbinghaus found that if you look at this graph, this is the retention graph, retention of whatever we have studied, and this is your days, means time versus retention graph. This is, so he found that after 20 minutes, after 20 minutes of what we have remembered, almost the retention will only be, you will be able to remember only 60% of things after 20 minutes. And after one day, you will only be able to remember approximately 30% you will be able to retain, right? So if you look at this graph, the maximum deterioration in retention happens after one day, within one day. Okay, so what do we mean by that? So suppose if you have studied something now, there are high chances that after 20 minutes you will be only able to remember 60% of the thing, and after 24 hours, after 24 hours, that means one day you will only be able to remember 30% of the things, 25 to 30% of the things which you have gone through, right? So forgetting is normal for everyone, but there are ways through which you can improvise on that, and we'll be looking into that. So please don't be too harsh if you're not able to remember the things, right? It's natural, it's common, uh, but there are ways to improve upon this, right? How to do that? We'll be talking about that. This is something which I will cover. This concept I will be covering. Now, the third thing which I wanted to cover in this today's video was how to categorize your learning so that you can remember better. So the very first thing which we need to understand, that whatever you are learning, suppose you have learned one chapter. What is the chapter? Let's say you have gone through a math. Let's take an example of maths, right? In maths, what you have, which chapter you have done? You have done AP. AP is arithmetic progression, right? So try to divide your learning into three parts. The first part of your learning should be what concepts you have learned from that chapter. Second is what facts you have learned. And third is what procedures or actions you need to take, right? Now, I will be explaining that. So when we say concepts means the conceptual clarity. Did you get the conceptual clarity about that chapter or not? Let's take an example of arithmetic progression. You let's take this example. So what is arithmetic progression? So in simple words, if the difference between, let's take an example, there are five numbers, five digits, right? 1, 2, 3, 4, 5. If the difference between the two consecutive numbers is constant, right? Difference between two consecutive numbers is constant. It means that these numbers are in arithmetic progression. That's a simple concept, right? So here, if you see 2 minus 1 is 1, then 3 minus 2 is again 1, 4 minus 3 is again 1, 5 minus. So this is a concept, right? So first part, we need to understand whether our concept about that chapter is clear or not. So that's the first categorization which you should do. Now, suppose uh, suppose we have to add all these numbers, right? Suppose the question asks that what will be the sum of this? What will be the sum of this? If that is the question, so if our concept is clear, in that case, what we can do? We will do 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, and simply if we look, the number comes out to be 15, right? So we know how this number 15, how these
arithmetic numbers needs to be added. But there will be some formulas, right? If we use those formulas, we can directly place these numbers and get the answer, right? So when we say facts, facts needs to be remembered. So in this case, suppose the sum of n numbers needs to be found out. So Sn is what? N by 2 into 2a plus n minus 1 into d, right? So this formula needs to be remembered, right? So remembering wala jo part aata hai, that comes under the fact. This comes under fact, right? तो अभी अगर आपको इसका सम करना है S5, अगर इसका इस एग्जांपल से हमको निकालना है तो हमने कैसे करना है? 5/2 into 2 into a is 1 plus n is 5 minus 1 into d again is 1. So if we look 5/2 into 2 plus 4, so that comes to be 15, right? So this is the factual part which we need to remember. Now when it comes to procedures, what are procedures? Procedures needs to be the actions or repetitions that needs to be done. So suppose आपने arithmetic progression पढ़ लिया, उसके concepts की आपको clarity हो गई, आपको formulas भी याद है, but are you solving the problems? Are you solving the problems? Until unless you don't solve the problems, आपका सिर्फ facts और concepts को remember करना will not be helpful for you in the exams, right? So all three things have to be there. इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से सपोज यू आर लर्निंग राइडिंग अ बाइसिकल, ठीक है, आपको बाइसिकल चलाना है अब, एंड योर डैड इज देयर विथ यू और योर मॉम इज देयर हेल्पिंग आउट, राइट? यू हैव रिमेंबर्ड द कॉन्सेप्ट, द फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, हाँ फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है साइकिल पे, ठीक है, बैलेंसिंग, फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, न्यूटन्स के कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिया, ठीक है. आपने कुछ फैक्ट्स भी बाइसाइकिल के बारे में लर्न कर लिया कि दिस बाइक हैज 5 गियर्स, राइट? That you have learned. But will it be fruitful? Only the concepts and facts will be fruitful for you in order to learn the bicycle? The answer is no, because actual learning will happen when you will do the procedure. Procedure means actually by riding. Riding, आप चलाओगे, फिर थोड़ा सा क्रैश करोगे, गिरोगे, फिर उठोगे, फिर राइड करोगे, राइट? तो थर्ड पार्ट इज प्रोसीजर. So always try to divide your learning into concepts, facts, and procedure, and then try to evaluate at which segment क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. हो सकता है कि आप फॉर्मूलाज तो याद कर लेते होगे, फैक्ट्स आपको याद हो जाता होगा और आप क्वेश्चंस बना रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर आर हाई चांसेस कि अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर क्वेश्चंस दे दिया जाएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है, और आपको फॉर्मूलाज भी पता है, बट आपने प्रोसीजर्स यानी कि सॉल्व नहीं किए बहुत सारे क्वेश्चंस, एक्शंस नहीं लिए आपने, रिपीटेशन नहीं किया है, तो क्या होगा? देयर आर हाई चांसेस आप while solving the problem you will do silly mistakes, right? So it is equally important that concepts have to be clear, the facts have to be clear, and the actions which are required for that has to be clear. Okay, so always divide or categorize your learning into these 3 steps. This is the concept which I learned from a book called Ultra Learning. Very good book, you can read that. So now coming to one of the most important part, what is active recall, right? So whenever we are learning, okay, so let me share with you one example. So there are two things. What happens is, what normally we have been trained to, हमें normally क्या बताया जाता है कि revise करो, right? Revise means what most people do, they repeat, repetition is happening, right? But is that the right way? And the second way is to actively recall things. Now let's take an example. There is a student, right? There are two students. So one student, what he or she is doing is, when he's or she is revising, what he's doing, first is R1. R1 means reading.
रीडिंग, उन्होंने रीड किया प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, मैथ्स की अगर बात करें, इन्होंने एक बार रीड किया, फिर क्या होगा, दे विल रिपीट द सेम थिंग नेक्स्ट टाइम, R2 इज द सेकेंड रिविजन. सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, we the information is coming from outside to inside. So R1 में भी क्या हुआ, पहले रीड किया सॉल्व किया तो बाहर से अंदर इंफॉर्मेशन, फिर R2 में भी what is outside to inside the information is coming, then R3 रिविजन 3 जब हुआ तो भी क्या हो रहा है कि बाहर से इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ रही है, राइट. So this is a repetition thing. What happens is in active recall is suppose first time R1 सबसे पहले हमने रीड किया प्लस सॉल्व किया क्वेश्चंस, है ना, ये करके हमने अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन डाल ली. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फ्रॉम द सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स you have to try to fetch information outside. Okay, you have to recall or fetch जो आपने लर्न किया है, राइट. सो आपने फेच एक बार किया, ठीक है, कैसे करना है वो, आप क्या कर सकते हो कि टेक अ A4 साइज पेपर, A4 साइज, A4 शीट्स, आप ब्लैंक शीट्स ले लो, एंड उस पे यू क्रिएट अ माइंड मैप, यू क्रिएट अ माइंड मैप ऑफ वॉट एवर द थिंग्स यू रिमेंबर जो आपने कल या आज या पढ़ा है, राइट. सो लेट सपोज आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने क्या पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, वो कॉन्सेप्ट्स को आप लिखिए प्रॉपरली, पेज में जस्ट लिखिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है. उसके बाद आपने कुछ फॉर्मूलाज नोट डाउन किए होंगे, ठीक है, फॉर्मूलाज आप देखिए कि कौन से फॉर्मूलाज यू आर एबल टू रिमेंबर. हो सकता है आपने उस पूरे चैप्टर में 6 फॉर्मूलाज होंगे और आप अभी पेपर पे जब लिख रहे हैं तो सिर्फ आप 2 फॉर्मूलाज को ही निकाल पा रहे हैं, ठीक है. देन फिर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस कुछ होंगे जो कि आपको याद होगा कि मैंने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था. फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपको याद आएगा कि आया होगा कि आई वाज स्टक एट दिस क्वेश्चन, बट आपको याद नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन था, राइट. देन ट्राई टू रिलेट कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था और जो फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं क्या वो आप निकाल पा रहे हैं, डिराइव कर पा रहे हैं. तो फोर्थ पॉइंट कैन बी डेरिवेशंस, एनी डेरिवेशन विच यू आर एबल टू रिमेंबर. ये आपको बुक देख के नहीं करना है, ठीक है. व्हेन वी आर फेचिंग द इंफॉर्मेशन, just try to fetch what you have learned earlier in a plain paper. Just take a plain paper like this and just keep writing. So this will help you. आप जब ये वाला process करोगे, you will find that you are able to remember maybe 40% of what you learned early yesterday. ठीक है, 40% या 30% या 50% आप remember कर. Now what you have to do is, now go back to your book and then revise what, कि आपने क्या क्या concepts 40% तो you remembered and what remaining 60% what you don't remember, उसको brush up करो, जाओ revise करो. So more you fetch from inside to outside, more the fetching happens, the higher chances for you to remember the things in future. Just by repetition, yes, you may remember, but you may not remember effectively that you will produce information out of it. Fetching or active recall is the most perfect way which has been researched back कि अगर आप actively recall कर रहे हो तो आप कर सकते हो, राइट. एक और पॉइंट मैं इसमें जोड़ूंगा, जस्ट एक और पॉइंट है कि एक और इसमें जो पॉइंट है वो मैं शेयर ये करूंगा कि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, तो मतलब आपको A4 साइज में पेपर पे प्लीज स्टार्ट रिकॉलिंग. इसमें पेरेंट्स के साथ व्हाट आई कैन आल्सो टेल कि सपोज यू आर सिटिंग टुगेदर, सपोज अ पेरेंट इज सिटिंग एंड अ चाइल्ड इज सिटिंग, राइट. और कल अगर चाइल्ड हैज डन सम read some concepts, ठीक है, तो just ask him to start, start writing things, है ना, what he has learned in yesterday's. Just write. हो सकता है 10%, 20%, 40% he will be able to produce, and that's absolutely fine. But it will start triggering his brain. ये हमने क्या याद किया था, right? So that is a perfect method. Please try to follow that. Now, one very important point: please take support. When we say take support, so suppose
लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने एक चैप्टर आपने लर्न किया, उसको लर्न करने के बाद आपने उसको कैटेगराइज किया। कैसे कैटेगराइज किया? आपने फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को अलग, फिर फैक्ट्स को आपने नोट डाउन किया, फिर आपने जो रिपीटेशंस हैं आपके प्रोसीजर्स, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, अभी आप देखो कि सपोज देयर आर सम formulas you are not able to remember. What you do is try to write this on a sticky notes. There are some supports which you can, additional supports like sticky notes. स्टिकी नोट्स आप लगा सकते हैं, ठीक है, जो चीजें आप भूल जा रहे हो बार बार। ठीक है, दूसरा, हैव अ white board at your home and keep writing the things which you feel कि इसको बार बार हमें आके रिविजिट करना है। जो चीजें रिविजिट करनी है उसको आप व्हाइट बोर्ड्स पे, स्टिकी नोट्स पे डाल सकते हो। देन व्हाट यू कैन डू इज एवरी डे यू कैन सेट अ अलार्म। अलार्म, लेट सपोज कि अगर आपके पास 30 मिनट्स का टाइम या 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स का आपको टाइम एवरी डे, आप मे बी 6 PM से 6:15 PM अगर आप फ्री रहते हो, तो ये आपका रिकॉल टाइम होगा। just set an alarm. What you have to do is just sit down with pen and paper, plain paper, and just start drawing the mind map कि कल मैंने क्या क्या पढ़ा या आज मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी, और उसको just try to recall that, right? So these are some of the supports. When I say support is like taking the help of alarm, taking the help of sticky notes, taking the help of whiteboards, or what you can do is take the help of your parents. You can ask your parent to ask questions। ठीक है, पेरेंट्स को आप बता सकते हो कि कल मैंने ये पढ़ा, आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछो। सो अगेन this will help. One important thing which also helps students is whenever you are learning, whenever you are learning, learn as if you have to teach। इस तरीके से कभी भी कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने की कोशिश करो जैसे कि आपको आपके फ्रेंड को या आपके जूनियर को, या तो आपके फ्रेंड को या आपके जूनियर को, ठीक है, या आपके सीनियर को पढ़ाना है। यू हैव टू टीच टू देम। ठीक है, द वे आई एम टीचिंग यू, राइट? सो वट एवर द कॉन्सेप्ट्स आई हैव लर्नड, आई एम टीचिंग यू, राइट? सो दिस हैज बीन LTD. This is called LTD. Please type this in the chat box. LTD means learn to teach. LTT, learn to teach, right? सो दैट ऑल्सो, अगर आप इस तरीके से पीक थोड़ा करोगे ना कि मुझे पढ़ाना है, उस कॉन्सेप्ट को रख के अगर किसी चीजों को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लर्न और रिमेंबर भी कर पाओगे, राइट? सो सपोर्ट, टेक सपोर्ट ऑफ some all these things, right? Like your whiteboard, sticky notes, set alarm to recall, ask, you take support of your brothers, sisters, or your parents so that they can ask you questions, right? So this is there. Now coming to what should be the strategy or the method for remembering the things, sorry, the revising। ठीक है, तो इसको देखते हैं, and this is the most important part. Please remember, always try to do the first revision immediately। मतलब पहला जो आपका रिवीजन या रिकॉल होना चाहिए वो इमीडिएटली। सपोज आपके क्लास में टीचर ने कोई चीज पढ़ाई, ठीक है, उसने पढ़ा दिया और टीचर वेंट, आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है बिटवीन सेकेंड टीचर कम्स इन द क्लास। आप इमीडिएटली इस 5 मिनट्स को रेदर देन यूटिलाइज करना कि ये करें वो करें, वेस्ट करने से बेटर है आपको करना क्या है कि आपने जो भी चीज सीखा उसको जस्ट गो रिवाइज योर नोट्स, ग्लांस कीजिए, आपने जो चीजें हाईलाइट की हो आप उसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, अगर आप एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं ना इमीडिएटली आफ्टर क्लास, सो इट विल हेल्प यू। The second revision should happen within 12 to 24 hours। ये जो रिवीजन होना चाहिए दैट शुड बी 30 मिनट्स। ये थोड़ा सा प्रॉपर डिटेल्ड रिवीजन होना चाहिए। कल टीचर ने जो पढ़ाया आज आप उसको प्रॉपरली 30 मिनट्स दीजिए, और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिकॉल करना है कि कल क्या क्या पढ़ाया था, और फिर आपको चैप्टर में जाना है, चैप्टर में जाके उसको रिवाइज करना है, राइट? सो दिस इज द सेकेंड टच पॉइंट कि आपने सेकेंड रिविजन किया। थर्ड रिविजन शुड हैपन डे 3। यहाँ पे हो सकता है 20 मिनट्स नहीं भी लगे, 15 मिनट्स भी अगर आप देते हैं, तो आप थर्ड रिवीजन आपको क्या करना है, सिर्फ कंडेंस
की लर्निंग्स जो है लास्ट 2 days में आपने पढ़े हैं उसको जस्ट गो थ्रू कीजिए। फोर्थ रिविजन शुड हैपन ऑन डे 7। डे 7 अगेन की नोट्स जो आपने की पॉइंटर्स जो हैं उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, प्लस रिवाइज कर सकते हैं कहीं पे भी जो चीजें छूट गई हैं। डे 15 अगेन जस्ट फिफ्थ रिविजन, 10 minutes, रिकॉल इट प्लस रिवाइज। अगेन डे 30th पे आपका सिक्स्थ रिविजन होना चाहिए। इट विल हार्डली टेक 5 to 7 minutes, क्योंकि आप एक चीज देखोगे, जैसे जैसे आप ज्यादा रिविजन करोगे आपका टाइम टाइम टेकन टू रिवाइज विल रिड्यूस। टाइम टेकन टू रिवाइज विल रिड्यूस। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड try to do recalls. What will happen if you do this? If you look at this, first day हमने देखा कि आफ्टर फर्स्ट डे हमारा काफी रिटेंशन कम हुआ, राइट। जैसे हम पहले दिन में पहला फर्स्ट रिवीजन करते हैं ना, अगेन हमारा रिटेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, फिर डे 3 पे हम वापस रिवाइज करते हैं तो फिर हमारा रिटेंशन बढ़ता है। ठीक है, और डे 7 पे हम फिर से रिवाइज करते हैं तो फिर रिटेंशन बढ़ता है। तो एक्चुअली आप यहाँ पे अगर देखो प्रॉपरली व्हाट इज हैपनिंग, डे आफ्टर 7 days अगर आपने मल्टीपल रिविजन्स किए, एक तो इमीडिएटली किया, फिर 3 दिन के बाद, फिर 7 days के बाद, तो पहले आपका रिटेंशन थोड़ा सा था, फिर आपका रिटेंशन बढ़ेगा, फिर 7th डे के बाद और ज्यादा रिटेन कर पाएंगे आप, राइट। सो it is very important that we use these tricks so that we can remember in the proper way, right? So I hope this session was useful. In today's session we covered the 4 important points: active recall कैसे करना है, categorize कैसे करना है learning को, what is Ebbinghaus forgetting curve, support लेना है दूसरों का, और revision की strategy या फिर recall की जो strategy होनी चाहिए हमारी क्या होनी चाहिए, right? So yes, this if you like this video, please give us a thumbs up, and if you have any comments or if you have any queries, please drop that comment in the chat box, and I will try to make a video on that. If you need a counseling session, a career guidance session from me, so what you can do is you can just connect to me on this number 7208310931. Please drop a WhatsApp message, and my team will try to revert you back. Don't call me because I may not take the calls, but yeah. So thank you for watching this video till now. I hope it helps. I keep on receiving a lot of queries on this topic, so that's why I thought कि एक video बनाते हैं जो कि helpful रहे सभी लोगों को, right? So thank you, and thank you if you have stayed till now. Thank you very much.